सारे पृथ्वी के लोग हमें जिया हो आओ जैसे खाए करे आओ सब मिलके हमें आनंद करे
आत्मा प्रभु का प्रेमी आत्मा प्रभु का अभी तो आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे अभी तो आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे जगत की बीच में से दया से निकाला हमें जगत की बीच में से दया से निकाला हमारे
हमें बारी बारी में पढ़ेगा। पढ़ता हूँ। हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तुम मुझे उत्तर दे। जब मैं सगेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझे पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। यही जान रखो कि यहोवा ने भक्तों को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वो सुन लेगा। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसे रहो। 7 और 8 इकट्ठा पढ़े।
Brethren, jaga kramara. Lamb of God, worthy is your name, O Jesus. Lamb of God, worthy is your name. मिलकर गाएं, Jesus, Lamb of God, worthy is your name, O Jesus, Lamb of God, worthy is your name. यीशु खुदा का बेटा है तू, योग्य है तेरा नाम। यीशु खुदा का बेटा है तू, योग्य है तेरा नाम। You are my strength, my strength. You are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious soul, not to give up I'd be a fool. You are my all in all. Taking my sin, my cross, my shame, rising up and bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Oh, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. का पुस्तक से आज हमें थोड़ा सा स्टडी करें। We will study from the book of Nehemiah today for some time. नेहमिया तो एक यहूदी मनुष्य था। Nehemiah was a Jewish person वो अभी बाबेल में and now he's in Babylon. BC 606 में In BC 606, निबुकदनेस्सर राजा आकर इस्राएल को पकड़कर बंधुआई में लेकर चले गए। King Nebuchadnezzar came and took captive the people of Israel. तो उसी में ये नेहमिया भी हो सकते हैं। And in that group, Nehemiah was also there, it can be said. और वो वहाँ पर रहते हैं। And he was dwelling there. तो नेहमिया का पुस्तक BC 445 में लिखा गया है। And the book of Nehemiah was written in BC 445. 12 वर्ष का चरित्र ये पुस्तक में है। We can see the 12 years history in this book. ये पुस्तक का जो विषय है The topic of this book is दीवार को बनाना। the building of the temple wall. वही ये पुस्तक का विषय है। And this is the topic of the बहुत अच्छा एक बुक्स है। It's a very good book. तो हमें उसमें थोड़ा सा देखेंगे। So we will study from it some पिछले bit. दिन में प्रभु मेरा दिल में दिया वचन है। And previous days God gave me this word in my heart. दूसरा अध्याय Let's turn to chapter 2, उसका 18 वाक्य। verses 18. फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांधकर बनाने लगे, और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए क्या बांध लिया। अब தேவனுடைய கரம் என்மேல் நன்மையாக இருக்கிறதையும் ராஜா என்னோட சொன்ன வார்த்தைகளையும் அவர்களுக்கு அறிவித்தேன். அப்பொழுது அவர்கள் எழுந்து கட்டுவோம் வாருங்கள் என்று சொல்லி அந்த நல்ல வேலைக்கு தங்கள் கைகளை திடப்படுத்தினார்கள். அவர் நாம் பணிகளை
And I told them of the hand of my God that had been upon me for good, and also of the words that the king had spoken to me. And they said, let us rise up and build. So they strengthened their hands for the good work. प्रभु मो प्रति मोर परमेश्वर का मंगलमय हस्त विषय मध्य मो प्रति उक्त राजा को कथा विषय मो सेमानकु जणाइली कहिले सेमाने कहिले आस आम्भे माने उठी निर्माण करबा एही रूपे सेमाने सही उत्तम कार्य निमंते आपणा मानक हस्त सबल कले। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग हो गए ना? इतना वर्षादा पढ़ दिया। सो इतनी लोग कहेगा है So here people are telling, आओ हम उड़कर बनाएं। let us rise up and build. तो उन्होंने वो अच्छे काम के लिए So for the good work, एक दूसरे को हियाव दिया। they set their hands, they encourage each other. तो मेरा विषय है उड़कर बनाना है। So my topic is to rise up and build. हमें उड़कर बनाना। So we should rise up and build. हमें परमेश्वर का काम करना है। We should do the work of God. तो नेहम्या बाबेल में रहते हैं। Nehemiah dwelt in Babylon. मतलब इराक में वो रहता था। It is present day Iraq. वो राजा का पिलाना हारा था। So he was the cupbearer of the king. लेकिन हमेशा अपना देश के लिए वो चिंता करता था। Every time he used to get worried for his land. वो अपना देश के लिए बड़ा प्रेम उसको होता था। And he had great love for his country. ये नहीं अपना देश छोड़कर चले गया। Not that he left his country and वो went. बाबेल में अच्छा नौकरी मिल गया। That he got good job in Babylon. राजा मगल में अच्छा काम है। And he has good job in the king's palace. वो अपना देश को भी भूला नहीं है। He never forgot his country. उसको अपना देश के लिए बड़ा बोझ था। And he had a great burden for his country. क्यों देश के लिए बोझ हुआ? Why he had a burden for his वो country? देश परमेश्वर का नगर है। Because that country was the land of God. वो परमेश्वर ने दिया हुआ देश है। It is a land that God has given. वो परमेश्वर ने दिया हुआ देश होने का So कारण since God has given that land, तो उधर रहना ही उत्तम है। so it is good to dwell there. तो परमेश्वर का देश में रहना है। So he has to dwell in the land of God. आप लोग कभी इस्राएल में जाना है। You have to go to Israel sometime. तो परमेश्वर का देश है इस्राएल। It is the land of God. तो उधर ही जाकर रहने से बहुत बड़ा एक शांति अनुभव हो जाते हैं। We can experience a peace there while dwelling जो there. लोग जाकर आया है Those who have gone and come, बोलते हैं बहुत अच्छी जगह है। they say it's a very beautiful place. एक पास्टर बताते हैं What pastor says like तो this. अपने जमीन बिक्री कर भी उधर जाना चाहिए। So we should sell our land and go and dwell there. तो इतना महत्वपूर्ण जगह है। You know, it's such a beautiful place. लेकिन वो अभी वो देश सब उजड़ पड़ा है। But that land is lying in ruins now. इस्राएली लोगों का पाप का कारण Because of the sins of the people of वो Israel. नगर पूरा उजड़ पड़ गया है। Land is in ruins now. वो जीवित परमेश्वर को छोड़ दिया। So they forsook the living वो God. अन्य देवी देवताओं को आराधना किया। They went in after of other idols. परमेश्वर उनको शत्रुओं का हाथ में दे दिया। And God gave them into the hand of their enemies. और शत्रु उनको पकड़कर अपने देश में चले And गए। the enemy caught them and took them to their land. वो इतना भी नहीं, And not only that, वो देश को जला दिया है। and they burned that whole place. मंदिर को गिरा दिया है। They destroyed the temple. मंदिरों को आग जला दिया है। Put fire in the temple. वो दीवार सब जल गया है। So the walls all were burned. उसका एक का 3 वर्ष पड़े हिंदी में। जोर से इन्होंने मुझसे कहा हाँ। जो बेचे हुए लोग हैं बंधुआई से जुड़कर उस प्रांत में रहेंगे वे बड़ी दुर्दशा में पड़ेंगे और उनकी निंदा होती है क्योंकि यरूशलेम की सड़क नाले टूटी हुई और उनके फाटक जले हुए हैं। तो इधर ही वो कह लगा है। So here he is saying, तो यहूदा से कुछ लोग बाबेल में आ गया। some people have come from Judah to Babylon. तो उनसे नेहम्या ने पूछा And Nehemiah is asking them, वो बेच गए लोगों का क्या हाल है? and those who have got delivered, what is the हमारे देश का क्या हाल है? and what is the news of our land? अभी केरला में जलप्रलय हो गया। Now there was a great flood in तो Kerala. काफी लोग पूछते हैं केरला में क्या हो गया So है? many people ask what happened in Kerala. वैसे ही नेहम्या पूछ लगा है So likewise Nehemiah is asking, हमारे देश का क्या हुआ है? what happened to our land? क्या हाल है? What happened to our जो land? कुछ लोग बेच गए थे The survivors there. और उनका बहुत निंदा होते हैं। And he says a lot of
shame is वो happening to them. बहुत दुर्दशा में है। And they are in great reproach there. जब वो परमेश्वर देश से चले गया, When God went away from the land, परमेश्वर का लोग जब देश से चले गया, and the people of God went away from the तो land, देश दुर्दशा में पड़ गया। the land was in distress. परमेश्वर का निंदा होने शुरू हो गई। And the reproach of God started happening there. इतना भी नहीं, Not only that, यरूशलेम का दीवार टूट गया है। the wall of Jerusalem was broken down, उसका शर्मना सब आग से जला हुआ पड़ा है। and its gates all were burned with fire. बस इतना ही सुना था, He listened to only this much news. तो उसने बैठ कर रोना शुरू हो He गया। sat down and he started to cry. तो 4वां वाक्य में लिखा है, It's written in verse 4. ये बात जब उसने सुन गया, When he heard this word, वो बैठ कर रोना शुरू हो गया he sat down and he wept और दुख उठाया and mourned for many days. और उपवास किया, And he took वो fasting विलाप किया, and he prayed before परमेश्वर God. से प्रार्थना किया And है। he prayed to the God of heaven. अपना देश के लिए उसका एक बोझ हो He गया, had a burden for his country. तो उसने रो लगा So है, he kept on वो weeping. विलाप कर लगा He है, kept on mourning. वो उपवास कर लगा He है, kept on वो fasting. प्रार्थना कर He लगा kept है। on praying. हमें अपना देश के लिए एक चिंता होना है। We should have a burden for our land. देश में कौन रहते हैं? Who dwells in the land? हमारा लोग रहते हैं। Our people dwell in the land. हमें उन लोगों के लिए चिंता करना We है, should have a burden for them. उनका हाल चाल पता करना We है, should know their well-being. परमेश्वर का लोगों के लिए चिंता करना है, We should worry about the people of परमेश्वर God. का मंडली के लिए चिंता करना We है, should have a burden for the church of God. परमेश्वर का मंडली का हाल चाल पता करना है। We should know the well-being of the church of God. अगर उनका दुर्दशा में है, And if they are in distress, उनका निंदा होता है, तो if they are being reproached, हमारा एक कर्तव्य है, we have a duty towards बैठ it. कर रोना, That we should sit and अपनी weep. उपवास करना, We should sit and fast. प्रार्थना करना। We should pray. यिर्मयाह का जीवन में ऐसा हो गया, In Nehemiah's life like this वो happened. विलाप करते रहा, He started mourning. उपवास करते He रहा, started fasting. प्रार्थना करते रहा, He kept on सब praying. राजा का काम ही कर रहा है। And on the other side, he did the king's work also. एक दिन राजा के सामने खड़ा रहा है, And one day he's standing सो before the king. दाखिरस देने के लिए वो उधर खड़ा है। And he's waiting to put the wine in the king's cup. उसका दूसरा अध्याय दूसरा वाक्य में लिखा है, And chapter 2 verses 2 it says, राजा ने उनसे पूछा, and the king asked तेरा मुंह Nehemiah, क्यों उदास है? why is your तू face तो sad? योगी तो है नहीं You है, are not sick. ये तो मन का बात है। This is the sorrow of अगर heart. हमारा मन में दुख लगेगा तो So if there is sorrow in our हमारा heart, हमारा मन मुंह उदास रहेंगे। our face will be dull. तो ये भी यिर्मयाह को हो गया, So this same happened to वो Nehemiah. डर गया। So he became फिर भी वो afraid. परमेश्वर से प्रार्थना कर कर कहते हैं, But he prays to God and says, जो मेरा बाप दादों का कब्रें जहाँ है, and the tombs of my fathers where it is, वो नगर सा उजाड़ पड़ा है, the land and the gates there all are wasted. दरवाजे जले हुए हैं, The gates are burned. क्यों मेरा मुंह उदास नहीं होगा? Why shall not my face be देश के लिए sorrowful? चिंता करने वाले एक व्यक्ति And the person who has a burden for उपवास his करना country, शुरू हो गया। he started taking fast. तो परमेश्वर ने राजा का दिल में काम किया है, So God worked in the heart of the तो king. राजा ने उसको दीवार बनाने के लिए छोड़ दिया। And God allowed him to send him for building the wall. राजा ने बहुत मदद किया है, And the king helped the law. लोगों को दिया है, And king sent the धन people. संपत्ति दिया है, King gave property. तो लेटर लिख कर दिया है, King gave the authority letter. तो उसको बहुत also. खुशी हो गया। He was very happy. वो कुछ यहूदी लोगों को लेकर And he took some Jewish तो people. वापस यरूशलेम में आ गया है। And he came back to Jerusalem. वही हमें पढ़ा था, And that is what we have उधर वो 3 दिन रहा, He dwelt there 3 days. तो पूरा जानबीन कर कर देखा, And he surveyed everything. वो उसने लोगों को कुछ बताया नहीं, And he did not tell anything to the people. आखिरी में उन्होंने लोगों को बताया। And in the end, he is telling to the people. तो 17 वाक्य पढ़े, Verse 17. 2:17। तब मैंने उनसे कहा, हाँ, तुम आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं, कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। तो उन्होंने कहा, यिर्मयाह ने लोगों को कह लगा है, Here Nehemiah is telling to the people, हमें कैसे दुर्दशा में पड़ा है, we are in great distress here. यरूशलेम शून्य में पड़ा है, Jerusalem lies waste. उजाड़ पड़ा है, And its gates are उसका burned. दरवाजा सब
know. तो उसने अपना देश का विषय में कार्य कहा है, And he's speaking about his country वो there. अपना मंडली के विषय में कार्य कहा है, Speaking about his church there. हमारा मंडली कैसे पड़ा है, And our church, how it is. तो उच्चाड पड़ा है, It is like waves. अशांति में पड़ा है, It's like in this मंडली में कोई जीवन नहीं है, There's no life in the church. कोई नया लोग उधार नहीं पाते No हैं, new people are receiving तो salvation. वही अनुभव में हम लोग चल रहा We है। are walking in that same experience. तो ये लोगों ने जब सुना So when they heard this, तो उन्होंने कहा आओ हमें पढ़े, आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाएं, तो आओ यरूशलेम का शहर नाव को बनाएंगे, let us rise up and build the town of Jerusalem. कि भविष्य में हमारी नाम धराई न रहे। तो भविष्य में हमारा निंदा ना हो जाए, So in future we may no longer be भविष्य में हमारा निंदा ना होने के लिए So in future we may no longer हमें be यरूशलेम का दीवार को बनाना है। Let's build the wall of Jerusalem. यरूशलेम में परमेश्वर का भवन है, In Jerusalem there is the house of तो God. परमेश्वर का मंदिर उधर है, And the temple of God is there in वो अभी Jerusalem. टूटा हुआ है, Now it is broken. उसका चारों तरफ दीवार है, And there is a wall surrounding it. उसका 12 दरवाजा है, And it has 12 doors. तो वो सब जला हुआ पड़ा है, And it's all burned. तो उसको हमें बनाना है। And now we have to rebuild it. तो लोगों ने बोला आओ हम बनाएंगे, And the people said, come let us लोगों build. में उत्साह हो गया And है। there was a desire in the heart of the तो people. 18 वाक्य में हमें जो पढ़ा है, When we read verse 18, तो आओ हमें उठकर बनाएंगे, let us rise up and build. वो अच्छे काम के लिए, And for a good work. तो वो एक दूसरे को हिया बुलाता है, And they encouraged each other. अच्छा काम के लिए एक दूसरे को हिया दिया। And to do a good work, they encouraged each other. काम बढ़ना है तो If the work should increase, दूसरे को हिया देना पड़ेगा, then we should encourage each other. हमें मिलकर बनाएंगे। And we will together build. हमारा जो इधर भारत में आरंभ में And in beginning times in तो Paradeep, जब छुट्टी होते हैं, when there was vacation, कुछ भाई लोग होता था जाकर पर्चा बांटने के लिए, and some brothers were there, they would go and distribute tracts. हमें ओपनिंग प्रेयर करते थे, They used to conduct open air तो prayer किताब meetings. बांटते थे, किताब बांटते They used to थे, distribute books. पर्चा देते थे, They used to distribute tracts. ऐसा कुछ भाई लोग होता था। So some brothers were there. उसी वक्त का अनुभव नहीं है अभी, But that experience no longer exists अभी today. तो ओपनिंग प्रेयर कर नहीं सकते, Now we can't do open air prayer meetings. मुसीबतें हैं। There is trouble. तो लेकिन उन दिनों में हमें करते थे, But those days we used to do. जब हम कश्मीर में थे, When we were in Kashmir, छुट्टी होने से पहले भाई लोग करता था, and before vacation time, brothers used to तो say, करे पास्टर साहब छुट्टी होने वाले हैं, and they used to say, Pastor, the time of आप vacation, तैयार रहना है, हम जाएंगे। and you should be ready, we will go. मैंने प्रभु का सेवा के लिए एक दूसरे को उत्साह करता था, They encourage each other for the work of God. तो इधर भी वैसे ही हो गया। So here also it is like this. गिरा हुआ दीवार को बनाने के लिए And to build the broken wall, एक दूसरे को ही हम दिया है। they encourage each other. जब तक हमें मिलेगा नहीं Till we don't meet each तो other, काम होगा नहीं। we will not be able to do the work एक of God. व्यक्ति का काम नहीं है, It's not the work of one एक व्यक्ति person. सोचने से भी नहीं होगा। And even one person desires it will not happen. मंडली भी ऐसा है, The church also is like ये that. एक व्यक्ति का काम नहीं है, It's not the work of one सब person. विश्वासी लोग मिलकर करने से होगा। And every believer together, when they gather, then it will happen. मंडली बढ़ना है तो If the church should grow, सब विश्वासी लोग मिलना है, so every believer must सब gather together. विश्वासी लोग उत्साहित होकर जो काम करेगा Every believer, when they are encouraged and work zealously, वो मंडली बढ़ना शुरू हो जाएगा। the church will start growing. क्योंकि उन्होंने जब वो काम के लिए लोग तैयार हो गया, Because when they became ready to do the work of God, और काम करना आरंभ हो गए, and when they started doing the work, शत्रु आ गया। the enemy came. तो 19 से लेकर पढ़ेगा तो ऐसा लिखा है, When we read from verses 19 onwards, we find that सन्बलत और तोबिया, the Sanballat and और Tobiah एक व्यक्ति and one more person, परमेश्वर का लोगों को निंदा करना शुरू हो गए। and they started to laugh at them. तुम्हें राजा का निंदा करने जा रहा है, And you are rebelling against the king. तो उनका निंदा किया है। And they despised them. लेकिन उन्होंने कहा है, What they said, 20 वाक्य, verses 20. तब मैंने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, हाँ। स्वर्ग का
परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा। Praise the Lord. Hallelujah. यहाँ में अंदर लगा है। Nehemiah is telling one जब thing. शत्रु बोलते एक तो होगा नहीं है, When the enemy says that it will not happen, लेकिन नेहमा कर लगा है but Nehemiah is telling one स्वर्ग thing, का परमेश्वर that the God of heaven हमारे कामों को सफल करेगा। will prosper our works. हालेलुया। Hallelujah. हम लोग भी कर सकते So हैं। we can also say, हमारा काम कौन करेगा? who will do? हमारे काम को कौन सफल करेंगे? Who will make स्वर्ग success? का परमेश्वर हमारे कामों को सफल करेंगे। The God of heaven, He will prosper our work. आप कुछ काम का सामने बहुत समस्या में होंगे। You may be in great tension before some work in your आप life. सोचे एक काम कैसे आगे क्यों ले You जाएंगे? may think, how will this work go forward? तो कौन मदद करेगा? Who will help me? लेकिन इधर हम एक कर सकते हैं, But here you can say, स्वर्ग का परमेश्वर the God of heaven हमारे कामों को सफल करेंगे। will prosper our work. इसलिए उनका दास लोग हम लोग खड़ा होकर काम करेंगे। Therefore, we, His servants, we will rise up and build. तो हम लोग खड़ा हो जाएंगे, So we will rise up हम काम करेंगे, and we will build. क्योंकि परमेश्वर हमारा सहायता करेगा। Because God will help us. Praise the Lord. Hallelujah. आपका सहायता कौन करेगा? Who will help you? परमेश्वर ही आपका सहायता करेगा। Only God can help you. जब यीशु का समाधि के पास कुछ बहन लोग जा रहा था, When near the sepulchre of Jesus Christ, some sisters came. तो उनका पास तेल है They have oil यीशु का शरीर में लगाने के लिए, and to put anoint on the body of लेकिन Jesus. उनका सामने बड़ा समस्या भी है। But they had a problem before them. क्या है? समाधि के सामने बहुत बड़ा एक पत्थर लगा हुआ है, And before the sepulchre lies a huge stone. उसमें सील भी लगा हुआ है। There is a seal there. तो इन्होंने आपस में बातचीत कर रहा है। So they talked within themselves. जब हम मार्क 16 का 1 से लेकर पढ़े तो आपको मालूम हो When जाएगा। we read Mark 16:8 onwards, we find तो that उधर में लोग आपस में बातचीत करते the हैं। sisters talked among तो themselves. हमारे हाथ में तेल तो है, We have oil with our hands. लेकिन द्वार का कब्र का द्वार से कौन पत्थर को हटा But देंगे? who will remove the stone from the tomb? वो साधारण पत्थर नहीं है, It was not an ordinary वो stone. बहुत बड़ा था। It was a huge stone. बहुत लोग मिलकर उसको लुढ़ाकर उधर ले दिया। And many people gathered together and rolled it and put it ये there. बहन लोगों के लिए वो हटाना असंभव है। It was impossible for the sisters to roll it away. लेकिन जब उन्होंने समाधि में पहुंचा, But when they came to the tomb, क्या देखा है? what did they see? पत्थर को हटा हुआ है। That the stone is rolled away. हालेलुया। Hallelujah. उन्होंने सोचा हमारे लिए पत्थर को कौन हटाएगा? Who will roll away the stone for us? लेकिन उधर जब पहुंच गया, But when they came there, देखा उनके लिए पत्थर हट गया they है। saw that the stone is already rolled away. परमेश्वर ने उनके लिए पत्थर को हटा दिया। God rolled away the stone for them. उनका इच्छा को पूरा नहीं हुआ। And their desire was not उनका fulfilled. इच्छा था यीशु का शरीर में तेल लगाए, And their desire was to anoint the body of Jesus with लेकिन oil. यीशु उधर नहीं था। But Jesus was not there. ऐसे भी वो पत्थर उनके लिए एक समस्या था। But since the stone was a वो problem for पत्थर को them, प्रभु ने हटा दिया। then God rolled away the stone from हमारे them. यात्रा का आगे And in our journey, तो रास्ता का बीच में बड़े बड़े पत्थर होते हैं। in between our journey life, road lots of big तो हमें stones. सोचते हैं कौन हटाएगा, Who will drive away, we see. लेकिन प्रभु ने काम करेगा। But God works. प्रभु हमारे लिए काम करेगा। God works for us. इधर नेहमा करेगा है, Here Nehemiah is telling us, स्वर्ग का परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा। God of heaven will work for us. इसलिए हम बनाएंगे। So therefore we will, भाई बहन, brothers and तो sisters, स्वर्ग का परमेश्वर हमारे लिए काम करेंगे। the God of heaven will prosper our और work. काम शुरू हो गया। So the work began. लेकिन शत्रु निंदा करना शुरू हो But the गया। enemy started to reproach. 4:3 में लिखा है, 4:3 says like this. तो वो लोग ऐसा कहा है And they said like this. कि जितना भी काम करे, Whatever work they do, कैसे भी बनाए, however they do, एक गीदड़ बैठने से वो टूट जाएगा। if a donkey sits upon it, it will break. वो निंदा किया इस्राएल लोगों And को। they started reproaching the people of बोले Israel. एक गीदड़ बैठेगा तो वो गिर जाएगा। If a donkey will sit upon it, it will break. वो वैसे ही निंदा किया। And they started reproaching लेकिन like वो that. बात भी उन्होंने परमेश्वर का हाथ में दिया। But that matter also they gave it to the चारों hands of वाक्य में लिखा है, God. Verse 4 says like हे this. परमेश्वर सुनना है, Hear our God, ये for लोग हमारा निंदा कर रहा we है, are despised by this people. लेकिन उनका कोई उत्तर नहीं दिया है। But God did not वो परमेश्वर का हाथ में समर्पण किया, and they gave it to the hands of God. परमेश्वर को ऊपर विश्वास किया। And they believed in God. जब आप 4 अध्याय घर में जाकर पढ़ना है, You should go to home and read the chapter 4. बहुत समस्या उनका जीवन में हो गया। Lots of problems came in their life. काम को रोकने के लिए शत्रु
शत्रु कोशिश किया, to stop their work. The enemies tried very much, लेकिन वो लोग हिया वो बांधा, but they encouraged वो themselves प्रार्थना किया। and they prayed. तो 9 वाक्य में लिखा है वो लोग परमेश्वर से प्रार्थना किया, And in 9 it says they prayed to God वो हथियार बांध कर काम करना शुरू हो गए, and they greeted their weapons and they started और working. स्नान करने का समय भी कमर में हथियार बांधा हुआ Even था। when they went to take their daily bath, they greeted तो God. रात दिन परिश्रम कर काम किया। Night and day they labored at the work. तो 6 का 15 और 16 पढ़े, 6, 15 and 16, let's read. पढ़े जल्दी। केवल महीने के 25 दिन को अदालत 52 दिन के भीतर सगपना उबल चुकी। जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना, तब हमारे चारों ओर रहने वाला सब अन्य जाति डर गया और लोग लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया है कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ है। तो जैसे लोग सोचा है वैसा नहीं। So as the people thought, it was not like that. लोगों ने सोचे काम से नहीं होगा, People thought this will not happen क्योंकि बहुत पत्थर पड़ा है, because there are a lot of stones, बहुत मिट्टी पड़ा there है, are a lot of sand, तो बहुत काम है, and there is a lot of work. ये लोगों से काम होगा So नहीं। this will not happen by them. लेकिन इनका भरोसा कहाँ था? But where was their faith? ये लोगों का भरोसा परमेश्वर के ऊपर था, And they had faith on God, परमेश्वर के लिए एक सहायता किया। that God will work for them. तो 52 दिन में दीवार बन गया, And in 52 days the wall was built. वो इतना जल्दी ये काम हो गया। Oh, so fast the work happened. इनका आसपास जो उनका मजाक किया हुआ जो अन्य जाति लोग हैं, सब सुन के देख कर लज्जित हो गया। And those who mocked them, the other people, they saw them and they were engrossed themselves. तो वो लोग कहने लगा है, And they say, ये काम this work, इनका ईश्वर का सहायता से हो गया। this work happened by God of them. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ये बड़ा काम This big work, ईश्वर ने प्रभु का सम्मुख में बैठा आराधना किया, प्रभु का वचन से हमें सुना, तो अच्छे काम के लिए एक दूसरे को हियाव दिया। सो आओ हमें उठकर बनाएंगे, अरे स्वर्ग का परमेश्वर हमारे कामों को सफल करेगा। का विश्वास था, इसलिए जल्दी उनका काम सफलता होने के लिए प्रभु ने मदद किया। एक काम का ईश्वर का सहायता से हो गया कर अन्य जाति लोग भी करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। हमारा सहायता परमेश्वर है, परमेश्वर ही हमारा सहायता करेगा। वो परमेश्वर को ऊपर में भरोसा रखे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। सब लोग प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। हमारा प्रेमी पिता परमेश्वर अंदर धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, ये सुबह समय में फिर से एक बार अब तेरे उपस्थिति में आने के लिए हमें मौका दिया। प्रभु जी, आत्मा का परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई में आराधना करने के लिए तेरे सम्मुख में आने में प्रभु जी मदद किया। हमारा आराधना कार्य से लेकर अब तक हमारे साथ रखा, इसलिए हम तेरे धन्यवाद देते हैं। जो भाई लोग आए, बहन लोग आए, बच्चे लोग आए, सबको तूने आशीर्वाद दे। जो लोग नहीं आ सका उनको भी तूने आशीर्वाद दे। प्रभु जी, अर्पण के लिए भी प्रार्थना करते हैं। तेरे नाम का महिमा का कारण होने के लिए प्रभु जी तूने सहायता कर। खासकर हमारे बच्चे लोग सब आने के लिए मदद के घबराए में तूने साथ रखा। प्रभु जी, सब बच्चों को तूने आशीर्वाद दे। प्रभु जी, अभी हमारा वही विषय है प्रभु जी, उसमें भी आशीर्वाद दे। प्रभु जी, तेरा महिमा में देखने के लिए मदद कर। आदर महिमा तुझे समर्पण कर यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ हमेशा होते रहे। हालेलुया।